you beautiful people, मेरा नाम है वंदिता वशिष्ठ and welcome back to Pricebaba. हमारी जनरेशन प्रैक्टिकली लिव्स ऑन आवर स्मार्टफोन्स. वेल फोन्स है भी आजकल की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस. वी नीड इट फॉर वर्क, वी नीड इट टू एंटरटेन आवरसेल्व्स, टू कनेक्ट, टू कम्युनिकेट एंड सो ऑन. वैसे स्मार्टफोन्स की बात करें तो ओप्पो का नाम दिमाग में जरूर आता है. आफ्टर ऑल द ब्रांड प्रोवाइड्स ऑल राउंडर स्मार्टफोन्स अक्रॉस डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स. बात करें अगर ब्रांड की लेटेस्ट मच एंटिसिपेटेड OPPO F19 सीरीज की, तो सीरीज हो गई है लॉन्च. एंड लेट मी टेल यू, जितनी स्टाइलिश ये सीरीज है उतना ही स्टाइलिश और अमेजिंग और लाउड था इसका लॉन्च इवेंट, जहां पर न्यूक्लिया ने मचा दी धूम. वेल कमिंग बैक टू द सीरीज, आई वाज रियली वेटिंग फॉर द सीरीज और टेरा आज हमारे पास आ गया है OPPO F19 Pro. Yes, the phone has launched, I have it, and I took this latest mid-ranger by the brand out for a spin, and let's see कि कैसा रहा मेरा day and night experience. Well guys, the first thing that I'll talk about, since camera reviews are my thing, is of course the camera. It offers a 48 megapixel AI quad camera setup with a 48 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide angle camera, 2 megapixel macro camera and a 2 megapixel mono camera. And for selfies you get a 16 megapixel selfie shooter. And वैसे कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात कर ही ली है तो एक काम करते हैं, कैमरा सैंपल्स पर भी नजर डाल ही लेते हैं. The day samples were good, no doubt, but the night samples, they were mind-boggling. OPPO has really amped up their night mode features to another level. Our generation loves vlogging our life and our moments, and for that, OPPO F19 Pro बनेगा आपका perfect camera companion. तो यहाँ AI color portrait video mode भी दिया गया है, जिसमें आप बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट करके सब्जेक्ट को और भी अच्छे से दिखा सकते हैं, which gives stunning results. अल्ट्रा नाइट मोड से भी यू कैन क्लिक ब्यूटीफुल वीडियोस लो लाइट सिनेरियो में भी. Also, vloggers and new age creators know the importance of capturing the scenario as well as themselves, and for that you get the dual view video mode, जिसमें आप सेम टाइम पर फ्रंट एंड रियर कैमरा से वीडियो शूट कर सकते हैं. एंड ये रहा इसका सैंपल. There's AI Scene Enhancement feature and just look at the before and after. Also, फोकस की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा because फोकस लॉक इसमें दिया गया है. साथ साथ वीडियोस के अलावा नाइट शॉट्स के लिए नाइट प्लस मोड भी आपको देखने को मिलेगा. All I wanna say is that the nocturnal photographer and videographer in you is gonna have a gala time, so be ready to flaunt your nights. Also, the conversation about the camera setup will be incomplete अगर मैंने डायनामिक बोके मोड का जिक्र नहीं किया. काफी आर्टिस्टिक शॉट्स क्लिक किए मैंने. वैसे दिस वन इज गोइंग ऑन माय इंस्टाग्राम. वैसे अब इतनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बाद आप सोच रहे होंगे बैटरी के बारे में. नॉर्मली स्मार्टफोन्स की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है एंड फिर आप चार्जर के स्लेव बन जाते हैं, बट नो, OPPO does things differently. Here you get 4310 mAh battery and its 30 watt VOOC Flash Charge 4.0 support will quickly juice up your battery in around 56 minutes, and then you can go back to having fun. Also, its battery guard protects your battery from overcharging at night. साथ साथ 30 watt VOOC Flash Charge support आपको fast और stable charging देगा during daytime. Also, OPPO claims कि 5 मिनट की चार्जिंग में आपको 2.9 hours का टॉक टाइम मिलेगा. I mean, how cool is that? I was mighty impressed with the design. I really don't like a bulky device, especially जब आपको उसे पूरे दिन यूज करना हो. OPPO F19 Pro provides such a minimalist, sleek design. I really like this premium feel design, that too in the mid-range segment. This phone is ultra thin and ultra lightweight. I mean seriously, just 7.8 mm thin and weighs 172 grams. And don't forget ये सब 4310 mAh बैटरी होने के बाद भी है. And the back panel finish, it's so good. Your hands won't hurt the entire day. Grip काफी अच्छी है. It gives you such a premium feel.
बैक पैनल पर है इसका सिंगल पीस क्वाड कैमरा मॉड्यूल एंड बिलीव मी इट लुक्स सो एलिगेंट. I mentioned my entertainment needs, and while Netflix and other OTT platforms have become a way of life in this pandemic, and for that display बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है. अब डिस्प्ले पर आए तो 6.43 इंच सिंगल पंच होल डिस्प्ले कैन बी सीन. द पंच होल इज वेरी स्मॉल, हेंस ऑफरिंग एन इमर्सिव एक्सपीरियंस. एंड डिस्प्ले की एक्सपीरियंस की बात करें तो सभी लाइटिंग कंडीशंस यानी कि इंडोर या आउटडोर आपको डिस्प्ले में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी एंड आप सभी टास्क जैसे कि वीडियो वॉचिंग हो या मैसेजिंग सब एंजॉय कर पाएंगे. For security, you get in-display fingerprint 3.0 sensor and face unlock features, and trust me, काफी efficient and smooth experience आपको देखने को मिलेगा. For performance, this mid-ranger boasts of MediaTek Helio P95 chipset, which is backed by 8GB RAM with 128GB and 256GB internal storage variants. So 8GB RAM आपको स्मूथ मल्टीटास्किंग में हेल्प करेगा एंड ज़्यादा स्टोरेज की हेल्प से आप अपने फोटोज, सॉन्ग्स, मीडिया को आराम से मैनेज कर पाएंगे. एंड आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको सही ही मिलेगा. All I can say is no lags and super smooth performance. Also ColorOS 11.1 में आपको काफी सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे which will make your experience very efficient. While coming to the software, आपको इसमें देखने को मिलेगा ColorOS 11.1 which is based on Android 11 out of the box. बात करें अगर ColorOS की तो ओप्पो ने इसे पहले से बेहतर बना दिया है और आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि ऐप लॉक एंड प्राइवेट सेफ एटसेट्रा. So guys, to sum it up all in the end, finally एक मिड रेंज स्मार्टफोन जो स्टार्टिंग मेंशन किए सारे एस्पेक्ट्स में फिट होगा. मैंने आपको अपना पूरे दिन का एक्सपीरियंस दिखाया विद OPPO F19 Pro and it aced in all the arenas. डे फोटोग्राफी काफी फोन्स में अच्छी मिलेगी, बट OPPO's focus on night videography and photography is so impressive. The AI color portrait video mode is a game changer. Well, going out at night with this device would mean capturing some stunning night videos and shots. इसके डिजाइन एंड लुक्स विद दैट लाइटवेट बॉडी मेक्स इट सो एफिशिएंट एंड स्टाइलिश. इनफैक्ट बैटरी जो कि कांस्टेंट कंसर्न होता है वो भी यहाँ पर सॉल्व हो गया विद अ 30 वॉट VOOC Flash Charge 4.0 सपोर्ट. Not to forget the ample storage space. And guys, all of it at such a good price point. Also, here are some of the offers which you can avail while buying this smartphone. Well, now my smartphone worries are sorted. Now let me get back to my day. And of course, if you like this video, then do like it, share it and subscribe to our channel. It's a very simple drill and you know it. Till then, this is Vandita Vashus saying goodbye.